Hello guys, welcome back to Ansakari. Today we are discussing with the relationship with social sciences, the four topics sociology and political science. Sociology is devoted to the study of all aspects of society, whereas conventional political science restricted itself mainly to the study of power embodied in the formal organization. So, what do you mean by formal organization? The organization which has some rules and regulations, that is called formal that our government have some rules and regulation. Okay, then next point, sociology stresses the interrelationship between sets of institutions like family institutions. I have clear to you what is social institution, that is like family, schools, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इंक्लूडिंग गवर्नमेंट. सोशियोलॉजी क्या करती है, इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी करती है जिसके अंदर गवर्नमेंट इंक्लूड होती है. वेयरएज पॉलिटिकल साइंस टेंड्स टू टर्न अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोसेसेस विद इन द गवर्नमेंट. तो पॉलिटिकल साइंस क्या स्टडी करती है, प्रोसेसेस विद इन द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो कौन स्टडी करेगा, पॉलिटिकल साइंस करेगी. तो अगर हम पावर के रिलेटेड एक सोशोलॉजिस्ट का नाम ले, वो कौन है, उस थिंकर का नाम है मैक्स वेबर, who gave the term political sociology and which showcases the convergence and divergence between sociology and political science. For example, ले लेते हैं, in the times of election, the process of decision making in an organization, sociological reasons for the support of political parties, the role of gender in politics, etc. matters a lot. तो इलेक्शन प्रोसेस है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक, लेकिन जब उसमें रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स आ जाता है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, पार्टीज का सपोर्ट थ्रू द कास्ट सिस्टम हो जाता है, वही सारी चीजें सोशलोजिस्ट उसके अंदर स्टडी करते हैं. देन केम तो एक टर्म क्या है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी. तो वो क्या शो करती है, देयर इज कन्वर्जेंस बिटवीन सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.